Assalamu alaikum everyone. Dr. Hassan Javed here. Right now, I'm holding a MBBS and MRCS. मेरे साथ हैं Dr. Ataur Rahman. He's an orthopedic surgeon, FCPS 2, and MRCS as well. And very soon, Dr. Irfan, he will be joining us. He's also MBBS and he also cleared the PLAB and MRCS and right now working in the NHS. So he will guide us about the future pathways. So first, let me introduce the MRCS. MRCS basically it's later on we will have question sessions as well. Just I need your 5 minutes to explain about the MRCS. First, let me introduce about the MRCS. MRCS basically is a Royal College of Surgeon exam. There are four colleges, but their exam for Part A is almost same. Thus, there are two parts in MRCS, MRCS A and MRCS B. In MRCS A, basically there are two papers in MRCS A. For paper one, the marks are 180 marks, and paper two marks are 120. Paper one, they take like from the basic anatomy, pathology, physiology, and microbiology. And in paper two, they take from the surgery, most probably like abdominal surgery, neurosurgery, emergency trauma, pediatric surgery, and vascular surgery. And there are other. So for paper A, there are 180 marks, and it's almost for the 3 hours. And then they give almost for 1 hour break. And after that, there is a paper two, that is for the 120 marks. So altogether, every time they make, a different criteria. When I passed the exam, that time the passing criteria was 63.7. Sometime it goes to 65, sometime it goes to 67. It depends on the exam. Like if the exam is easy for everyone, so the passing criteria is high, but if the exam is tough for everyone, they decrease the passing criteria. This is for the MBBS time duration, and let me tell about the cost. For MRCSA, it's almost 570 pounds, and for MRCSB, almost 1,000 and like 40 something pounds. Study material. We don't need any specific books. If you want to study for your own knowledge, that's fine, but you don't need specific books. There are online subscriptions like EMRCS and PASTES for MRCSA. You have to study from there. Uh, they also let you have a practice online, and they all the study material available in the online subscription. Doctors, and we also do some recalls as well, and there are some notes as well. We do study. We don't study any specific book for that. Now, I would like to invite Dr. Atta, the orthopedic surgeon and the MRCS holder. I would like to invite Dr. Atta. Please also elaborate about the MRCS time duration and study time. Dr. Atta, are you here? Yeah, yeah. Yes, please. Son of um, Dr. Hassan, as you said that I just completed my FCPS training in orthopedic, and also I have just done with MRCS. So, I would like to tell you about like the good time preparation for MRCS. Is if someone like he's a resident, he's doing training in general surgery or any other specialty, uh, just like orthopedic or urology, whatever. The good time for MRCS Part A is, um, I think, it is best time to study for MRCS Part A is before IMM, intermediate module, because the IMM exam and the Part A is almost same. But a little bit you have to study more for it because um, especially like the EMRCS, which is having 1200 MCQs. So IMM study is less than that, but somehow 50% you can cover from that, and that is a good time.
for part A. For part B, after IMM, like if you pass your talks, so it will help you in part B. But definitely for part B, you need another 4 to 5 months to study for it. That is consecutive study. For those who are in general surgery, they can even do their part B just before their part 2 exam as well. But for other resident, like their training is different than general surgery, like orthopedic or urology or neurosurgery. So for them, I think the best time is 1 year before their part 2, because this is a different study from their specialty. So it will be like very difficult for them to prepare for their part 2 as well. And for those who are like still undergraduates, so I think they can just prepare for part A, but they cannot eligible for exams because they need degree for part A. So I think they will need to have a degree for it. Other thing is yeah, that's I think enough for it. And for time durations, for part A, you need just 3 to 4 months if you have good knowledge in basic science. But if you don't have good knowledge in basic science, so you might need more than that, like 5 to 6 months almost. For part B, you will need 5 to 6 months consecutive study. 3 to 4 months, I think, enough for those who are working in NHS. Maybe they can do it on 3 months. But other than that, they need more than 5 to 6 months, because our way of training and the way of NHS is very different. So I think that must someone must need 6 or 7 months or more than that, maybe, for part B. Dr. Hassan, I think this much Yeah. is enough for general. Okay, there were many doctors, they were asking about the eligibility criteria. You just need an MBBS degree for the eligibility of the MRCSA as well as MRCSB. You don't need any like PMDC license or any other country license. You don't need. After part A, you can go without. If it's better if you have any like surgery experience. But if you don't have, they don't require. They recommend, yeah, you should have experience. But if you have experience, it will be beneficial for you in the part B. But if you don't have, they don't have any special demands that like you should have a training, something like that. You can just on the MBBS degree, you can go for the MRCSB as well. And after that, from clearing the OET, yeah, for OET, don't required for the part A and part B. You don't need OET exam, but for the registration of the GMC, you need OET as well. You can get benefits of MRCS is like you can get GMC registration just on the behalf of MBBS degree and after clearing MRCS A and MRCS B. And after like this exam is also eligible in different countries. It is eligible in the Ireland as well, in UK, in different other countries like in Australia, following their relevant pathways, and Canada, and some European and even in Gulf countries as well. Even in Pakistan as well, they do on this exam as well. So there are multiple benefits. There are many doctors who may not pass the like PMDC exam yet. So like if you are going to study the MRCS, you will have a very good grip on the basics like anatomy, pathology, physiology, microbiology, and in surgery as well. So, like if you will prepare this kind of exam in the future, I'm sure that you can pass any country licensing exam like PMDC or any other relevant other country exam. It will be very easier for you. Okay, now let's have a question sessions. Now everyone who have some questions, they can ask in the live webinar. Yes, yes, it's the.
हेलो डॉक्टर। Yes, yes, hello. क्वेश्चन से एक तो मेरा पहला ये क्वेश्चन है कि आपने जैसे कहा कि आपको एमआरसीएस करने के बाद जीएमसी की रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब आप जीएमसी की रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होते हो और आपको एमआरसीएस के लिए किसी क्लिनिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं वो जीएमसी का मतलब ऑफिशियल पेज देख रहा था तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे जीएमसी जब आप अप्लाई करते हो जीएमसी की रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो आपसे ज़रूर पूछते हैं आपके बैक होम या कोई भी किसी भी तरह का क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका कितना है। तो अगर तो Uh, वो हमारे पास सर्जरी का ना हो तो हम उसको मतलब स्टिल वो जीएमसी हमें मतलब रजिस्टर्ड करेगी अपने साथ या नहीं करेगी आफ्टर एमआरसीएस। एक तो मेरा ये क्वेश्चन है और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि आफ्टर पासिंग एमआरसीएस जो सीएसटी के लिए हम एलिजिबल होते हैं वो कितनी कम्पिटिटिव है आईएमजीज के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम यूके ग्रेजुएट्स के साथ compete कर रहे होते हैं। Yes, okay, thank you. For the MRCS, you just need a degree. Like if you will have experience, it will be beneficial for you in the exams like Part A and Part B. But for eligibility for the GMC, you don't need any other licensing exam or something. But definitely, when you are applying for the job, if you will have some like specialty, you will get the preference. But for exam and for GMC, you don't need right now because I also has given the same exam. They just required the MBBS degree. Uh, this is the and sorry to say because the meeting time is remaining 8 minutes. So everyone, whoever have the question, please finish within the 8 minutes. Uh, and second most important, yes, hello, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। walaikum अ, salam. मैंने ये पूछना था सर कि अगर हम ये ट्रेनिंग जो रिक्वायर्ड होती है जॉब के लिए तो ये पीजी वाली ट्रेनिंग ये काउंट करते हैं या फिर अगर हम और क्लिनिकल साइट्स पे अगर किसी कंसल्टेंट के साथ अंडर ट्रेनिंग हो या फिर प्राइवेट सेक्टर पे कोई जॉब्स कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो वो ये काउंट करते हैं या सिर्फ पीजी वाले ही काउंट करते हैं? No, देखिए, for the MRCS A and B and for GMC, you don't need any training, right? But it will be helpful for you, for especially in the MRCS B, it will be helpful for you. But for the GMC, you don't need any like training right now. They don't require. But when you are after completing the GMC registration, जब आप यूके में हो जाती है आपकी, उसके बाद जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, देन दे रिक्वायर्ड लाइक आपका अगर ट्रेनिंग है जिस तरह से यहाँ पे हमारे एफसीपीएस है या एमडीएमएस है, अगर आपकी ये ट्रेनिंग है तो डेफिनेटली आपको उसमें फिर प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन फॉर द एग्जाम पर्पस एंड फॉर द जीएमसी यू डोंट नीड एग्जैक्टली for that might be at the beginning they hire you like as a junior, and later on the same hospital can give you the recommendations, same like in lab. People go over there and they have some clinical attachments. So if you get these also can get for the fresh graduates, these will also be the beneficial. And one more thing, for this, I'm trying my best to add the Dr. Irfan. He will also further guide us the future pathways. Any other question? Yes, Dr. Ali? डॉक्टर हसान, मेरा एक और क्वेश्चन है वो ये कि जब हम जीएमसी की रजिस्ट्रेशन हमें मिल जाती है आफ्टर एमआरसीएस तब हम वो कोर सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे या फिर हम नॉन ट्रेनिंग जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं यूके में? नॉन ट्रेनिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो माइट बी के एट द बिगनिंग आपको उसमें अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और आपके पास कोई स्पेशलिटी नहीं है, ठीक है, और आपके जो और देखें सैचुरेशन हर जगह पे होती जा रही है, ठीक है, तो लाइक इफ देयर विल बी सम अदर डॉक्टर्स हु ऑलरेडी have a FCPS as well or MS as well, definitely they might prefer them.
But let's suppose if you will join as a junior doctor over there and the same hospital and the same supervisor give you the recommendation, फिर आपको कोर ट्रेनिंग में मिल जाती है. बट आप जो है इसमें जो ये एग्जाम है इसकी बेस पे आप कोर ट्रेनिंग में ही जाते हैं. Thank you so much. वेलकम. Yes, anyone else has any question? हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. सर, मैंने ये पूछना था कि एपिक में और एपिक से या ICFMG से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने की ज़रूरत है, जैसे प्लैब में जो है Yes, वेरीफाई yes, करवाने की ज़रूरत होती है need, इसमें yes, MRCS के लिए. yes, yes, required. क्योंकि जब आप जीएमसी रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं उस वक्त आपको रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, जब लेट्स सपोज आपने ए पास कर लिया है, बी पास कर लिया है, फिर जब आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन नहीं, रिक्वायर्ड है बस तब आप MRCS पार्ट ए के लिए. नो 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 नॉट यू जस्ट नीड एन एमआरसीएस डिग्री. आपको सिर्फ एमआरसीएस की डिग्री रिक्वायर्ड है. वो आपको एक ऑथोराइजेशन फॉर्म सेंड करेंगे, वो आपने फिल करना है. वो आपको आपसे एक और चीज डिमांड करते हैं कि आप नोटरी पब्लिक से अपनी डिग्री अटेस्ट करवा लें. तो वो आप किसी भी लोकल जो हमारे यहाँ पे कचहरी होती हैं उनसे अगर आप जाके कहेंगे कि हमें नोट अपनी ये करनी है, वो 100 200 रुपीज लेते हैं, आपकी डिग्री वो नोटरी पब्लिक कर देते हैं. ठीक है, वही आपने अपलोड करनी होती वो है. यूनिवर्सिटी से करवानी पड़ेगी या इधर से नो नो कहीं से नो भी? यहाँ से किसी भी कचहरियों में ये जो होते हैं कोर्ट्स होती हैं, यहाँ पे नोटरी पब्लिक के ऑफिस जी जी. होते हैं. तो वो 100 या 200 रुपीज लेते हैं. तो वो आपकी जो फोटोकॉपी होती है डिग्री की उसको अटेस्ट कर देते हैं, वही आपने अपलोड करनी होती है. जी जी, चलें, ठीक है, थैंक यू. और सर, ये उसके लिए आइल्स वगैरह की भी देना होता है या OET वगैरह? नहीं, ये आपको राइट नाउ नहीं रिक्वायर्ड होता एग्जाम के लिए. ए के लिए भी नहीं रिक्वायर्ड एमआरसीएस, ए के लिए जी, भी, बी एग्जाम के के लिए भी लिए नहीं, हम पार्ट वन एग्जाम के के लिए लिए. नहीं रिक्वायर्ड. लेकिन जब आपने जीएमसी के लिए रजिस्टर्ड करना होता है तब आपको रिक्वायर्ड होता है. जब आप ठीक है, एग्जाम पास कर लेते हैं, रिक्वायर्ड जीएमसी ठीक. रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उस वक्त आपको रिक्वायर्ड है. अच्छा डॉक्टर हसन, ठीक है सर, थैंक यू. डॉक्टर साहब ने अभी ये जो क्वेश्चन किया कि यस यस. जो वेरिफिकेशन है डिग्री की, इसकी आप वो कचहरी से भी ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर जो आपके डिपार्टमेंट में है उसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इन्हीं से करवाया था अपनी डिग्री यस पे। यस, लेकिन उसके लिए उसके पास आरसीएस की वो होने चाहिए. नहीं डॉक्टर हसन, इसमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने अच्छा. गैर उसकी करवाया था, हाँ, उन्होंने ओके, कोई बिकॉज जो वो ईमेल सेंड करते हैं उसमें ये मेंशन होता है. आई थिंक वो आपने करवा के उसमें कर दिया. लेकिन नोटरी पब्लिक से भी हो जाता है. दे जस्ट टेक 100 200 रुपीज आपकी डिग्री की फोटोकॉपी को वो वेरीफाई कर देते हैं. तो वो आप उस पर अपलोड कर देते हैं, उनको ईमेल कर देते हैं. जी जी। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे चैट बॉक्स में कि FRCS की जो एलिजिबिलिटी है, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था इसकी एलिजिबिलिटी, तो ये FRCS जो है आप इंटरनेशनल FRCS इससे ले सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आपने MRCS दोनों स्टेप आपके क्लियर होने चाहिए, और इसके अलावा आपके जो ट्रेनिंग है, यानी कि अगर आप जनरल सर्जरी की 5 ईयर या 4 ईयर 5 ईयर ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे आप, किसी भी जैसे कि यूरोलॉजी की ट्रेनिंग है, आपने 5 ईयर कंप्लीट करना हो, 2 ईयर जनरल सर्जरी 3 ईयर यूरोलॉजी, तो उसके बाद आप FRCS के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन आपके पास MRCS के दोनों स्टेप होने चाहिए, आप इंटरनेशनल FRCS ले सकते हैं। फिर लोग ये प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे जाके MRCS, वहाँ पे जाके MRCS के बाद GMC लेकर वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं 3 ईयर्स, और वहीं पे ही FRCS ले लेते हैं। तो उसकी फ़ायदा ये होता है कि आपका जो इंटरनेशनल FRCS का जो लोगो होता है वो कट जाता है, और आप UK FRCS ले लेते हैं। तो वो एक अच्छी एक्सपीरियंस है, और आपके दुनिया में कहीं पे भी जाके आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इससे अच्छे जॉब वगैरह ये सब चीज़ों में हेल्प होता है, क्योंकि आपके पास UK बेस्ड FRCS एक्सपीरियंस है। Okay, anyone else has any other question? I think we are also running out of time because meeting time was 40 minutes. Um, uh, uh, it was a very nice meeting with all of you. But still, if anyone else will have any question, please leave in the group. It's a worth सर taking exam. At सर least, चैट्स में कुछ क्वेश्चन है, वो अगर आप उसका जवाब वगैरह दे दें. sure, sure. We will explain in the group, right?
We will ठीक explain है it to the सर group because it is now less than 1 minute. We will definitely explain into the group. And thank you so much for everyone for being here. It was very nice meeting with all of you. Thank you and see you soon.